Good evening, class. How are you all? I hope that you all are fine and doing great at your home. So, today we are going to start our chapter gravitation, right? So, we will be discussing about the gravitation, and since it's a large topic, so we are not going to cover all the things in a single lecture. We will be having different portions. We will be doing small portions, right? For the gravitation only. सो आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में ग्रेविटेशन क्या होता है एंड वी विल बी डिस्कसिंग ओनली द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन टुडे itself right along with the gravitational constant and its unit तो जल्दी जल्दी से सब लोग देखना शुरू करें देखना करें आते हैं तो इस चैप्टर के मॉड्यूल नंबर 1 में जो हम पढ़ने वाले हैं आज हम वो पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी कि कैसे ग्रेविटी का कंसेप्ट आया एंड हाउ द लॉ वाज गिवन बाय न्यूटन दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो पहले समझे ग्रेविटी होती क्या है, ग्रेविटेशन है क्या। आपने देखा होगा जो लोग ऊपर से जैसे स्काई डाइवर्स होते हैं जो ऊपर से नीचे धरती की ओर कूदते हैं जंप करते हैं, सो व्हाई दे आर रेसिंग टुवर्ड्स द अर्थ, राइट। और we say the can you imagine this skipping, this skidding, this jumping is possible without the gravity? We cannot imagine, even we cannot imagine a single task, a simple task of drinking water without the gravity. It will be very difficult. You can see in the spacecraft, आप स्पेस क्राफ्ट में देखें जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो पानी बोटा ऐसे पानी टहल रही है there this is very difficult that without gravity we can assume, we can imagine such things to happen, right? चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि डिस्कवरी हाउ द ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड। So once upon a time, as we all know in books, we have seen this story, we have listened to this story. एक समय की बात है, once upon a time there was a scientist known as Sir Isaac Newton who was sitting under the apple tree. आइजैक न्यूटन साहब पेड़ के नीचे बैठे हैं। कौन से पेड़ के नीचे? सेब के पेड़ के नीचे। अचानक से एक सेब टूटता है। रिलैक्स कर रहे हैं, किताब में रख के देखो प्यार से। अचानक से एक सेब टूटता है जो उनके ऊपर गिरता है। An apple fell on Newton. He started thinking, why the apple fell down on me? Why it didn't go in the upward direction? So जब उन्होंने इमेजिन करना शुरू करा तब उन्होंने रियलाइज किया कि भाई ये तो ग्रेविटेशन है और जो कि केवल एप्पल और अर्थ के बीच में लग रहा है। न्यूटन थॉट फर्दर दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज जस्ट नॉट जस्ट बिटवीन द अर्थ एंड एप्पल। घटना के बाद, इंसिडेंट के बाद जब उन्होंने और भी ऑब्जेक्ट्स को अप्लाई करना शुरू करा, एनालाइज किया, देन ही फाउंड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट ओनली बिटवीन द अर्थ एंड द एप्पल ओनली, it is not between the two objects on the earth only, but it is universally adopted, it is a universally true that any two objects are bounded with the gravitational force. So ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन एनी टू बॉडीज, किसी भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्कआउट करता है। सपोज देयर आर टू बॉडीज, वी आर हैविंग ए एंड बी, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन देम। ये न्यूटन सर का कहना था, ये ग्रेविटेशन लॉ का कहना है। लेकिन अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या आती है। जब आप इस चीज को सोचते हैं कि किसी भी दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो अब मेरे दिमाग में क्या बजा कि ये दो बोतल है, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए, राइट। तो नाउ दिस इज अब्सर्ड व्हाट, कि भाई ऐसा है कि मैं खड़ा हूँ, बगल से मेरी कोई कार जा रही है, तो मैं कार के साथ अट्रैक्ट हो जाऊंगा और कार से जाके चिपक जाऊंगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज एज पर ऑफ आवर इंफॉर्मेशन जो हमें बताया गया है। If a man is walking on a road and the car is passing by, so the man should get attracted to the car. या अगर मैं बात करूं तो अर्थ और प्लैनेट है जो नियर बाई प्लैनेट्स हैं, ठीक है, तो दे शुड गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर। अगर ये लॉ एग्जिस्ट करता है तो ये चीजें भी होनी चाहिए ना। तो देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वाई। ऐसा हम नहीं देखते कि ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे बगल से कोई गाड़ी जा रही तो हम जाके चिपक गए उसको बोनट पे, क्या हो उसे अट्रैक्ट कर लिया, राइट। इट डज नॉट हैपन, वी डोंट सी एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर रियल लाइफ। क्यों भाई? तो पहले समझ लेते हैं इसको क्यों ऐसा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड
The law of gravitation. What the law of gravitation says? So the first law of gravitation says that every body in the universe that is attracting or attracts every other object with a force which is directly proportional. What does it mean? Directly proportional to the product of their masses. Directly proportional means if a quantity is increasing, so the second quantity will be also increasing, right? If one physical quantity increases, then other physical quantity also increases. That is called directly proportional. Okay, and is inversely proportional to the square of the distance between their centers. Inversely proportional means if a quantity is increasing, so the second quantity will be decreasing. Okay, as your age is increasing, your childish behavior will be reducing. That is inversely proportional. As your age is increasing, your height will be increasing, your weight will be increasing. That is directly proportional. एज बढ़ेगी वेट बढ़ेगा, बड़े होते जाओगे वेट बढ़ता जाएगा, लेकिन एज बढ़ोगे तो आपका बचपना कम होना चाहिए, कम होता जाएगा. दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. So what we found here basically, we found that if one physical quantity increases, so the other will be decreasing. That is called inversely proportional. Got it? So now seeing this diagram, we can go through this law very attractively. There are two bodies having some masses m1 and m2. Suppose the first body is of mass m1, second body का mass कितना है m2 है. They are being separated by a distance r from their centers. Separated by the distance r. Now, according to this law, there will be a force of attraction between the two bodies that is represented by capital F. Now, F is proportional to the product of their masses. That is, F is proportional to m1 into m2. And see, this is. Since the mass of the earth is so huge, so the person gets attracted towards the earth. बट अगर हम यही पे बात करें कि पर्सन और कार के बीच में, तो कार का जो मास है ये अर्थ के मास के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है. इन कंपैरिजन टू द अर्थ द मास ऑफ द कार इज नेग्लिजिबल, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो नेग्लिजिबल ना. इस कारण से हम कार की ओर नहीं अट्रैक्ट होते. ठीक है, बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि हम अर्थ की ओर ज्यादा अट्रैक्टेड है भाई. अर्थ ने हमें ज्यादा फोर्स से खींच रखा है. Then how can we attracted toward the car? Yes, it is true कि कार भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन हम उसकी ओर जा नहीं रहे. ठीक है. Now the second is hence we do not attract objects around us. That is the thing. Now F is proportional to 1 upon r square. That is an inversely proportional notation. जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा. आप अपने रिलेशनशिप्स देखिए दोस्तों के साथ. जिन दोस्तों के साथ आप स्कूल में बैठकर पढ़ते हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है. कल को यही बच्चे दूसरे स्कूल में चले जाएं, दूसरे कॉलेज में चले जाएं, आपका बॉन्डिंग कम हो जाता है. हम यदा कदा कभी व्हाट्सएप पे मैसेज करते करते अदरवाइज हम दूर हो जाते हैं, राइट. सो डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स कम होता है, राइट. तो जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, देखिए अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं तो फोर्स विल बी मोर, लेकिन अगर हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया सो द फोर्स विल बी लेस, राइट. एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, चुंबक देखो, चुंबक से जितना दूर लोहे को लेके जाओ अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है कि नहीं. दैट इज द सेम थिंग. तो दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर. प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ता है जिसको हम कैपिटल G कहते हैं, वेयर कैपिटल G इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. अब अगर हम इस फॉर्मूले में m1 और m2 और r की वैल्यू को 1 मान लें, दैट इज m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 and r is equal to 1, so we will be getting F is equal to G, right. G into 1 into 1 over 1 square, that is F is equal to G. Now how can we define the gravitational constant? So the universal gravitational constant is basically a force of attraction between two unit masses. Mass of the bodies are 1 at a unit distance apart from each other. That is called as the law of gravitation, and that is called as universal constant of gravitation, capital G. Got it? Now
What is the unit of gravitation and importance of the gravitation? Let us derive the unit for the gravitation constant. मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ तक पढ़ेंगे आज ग्रेविटेशन कांस्टेंट तक, इसके बाद की बातें बाद में करेंगे। चलिए, हमने फॉर्मूला देखा F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर, कैपिटल G इक्वल टू F इंटू r स्क्वायर ओवर m1 m2, है ना। ये इक्वेशन के LHS RHS करके G को एक साइड रख के बाकी चीज़ों को हमने भेज दिया, तो यूनिट देखिए निकल कर आती है। SI मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, है ना। इंटरनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कह सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट कह सकते हैं। तो फोर्स का SI यूनिट हमें निकालना होगा क्योंकि F r स्क्वायर है ना फॉर्मूले में। सो F फोर्स का SI यूनिट क्या होता है बेटा, दैट इज न्यूटन ना, न्यूटन। R का SI यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का, मीटर। सो r स्क्वायर दैट इज अ मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। m1 का SI यूनिट, मास का SI यूनिट kilogram into kilogram, that is kilogram square. So this is the SI unit of capital G, that is called as universal gravitational constant, Newton meter square per kilogram square. अब अगर हम सीजीएस की बात करें तो आपको मैंने बताया हुआ है कि न्यूटन एक एमकेएस सिस्टम का यूनिट है, एसआई यूनिट है फोर्स का, और डाइन होता है सीजीएस सिस्टम में यूनिट। द सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स इज डाइन। मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि हम सेंटीमीटर की बात करते हैं सीजीएस में। किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा। सो यू विल बी गेटिंग 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, दैट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ कैपिटल जी। आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। नाउ ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये क्या क्या एक्सप्लेन करता है। नंबर 1, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द whenever a skydiver is racing towards the earth because of the gravitational force. The first thing that it explains, it is very hard to jump or without the gravity, right? The motion of the moon around the earth. The second thing that it it tells us about this motion of the moon around the earth because of the gravitational attraction of the earth. Motion of the planets around the sun. All the planets are revolving around the sun due to this large gravitational force, right? The tides of the sea due to the moon and the sun. You have seen the tides in the Ganga Sagar, in the Arabic Seas and all. So these tides are because of the gravitational force between the moon and the earth, or between the sun and the earth. That is basically the reason, right? So these are the point what we can understand here, the universal law of gravitation that explain us the forces due to which we are moving towards the earth, the motion of the moon around the earth, the motion of the planet around the sun, the tides of the sea due to the moon and the sun. Okay. So in the next topic we will be discussing about the more and more. For today it is enough and I hope that you have liked the video. आपको समझ में आई होंगी चीजें, और यदि समझ में आई हो तो प्लीज और प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपने उन सारे दोस्तों को शेयर करें जो किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, है ना। अच्छी चीजें वायरल होनी चाहिए लोगों तक। ओके, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।